Follow us to stay updated on debates, discussions, facts, and tips about health. Click on the subscribe button and the bell icon for latest updates. Diarrhea is often dismissed as a minor inconvenience, but the truth is that it can cause significant physical and emotional distress, and in severe cases, even be life threatening. This is especially true for children and families worldwide who are affected by diarrheal disease in staggering numbers. It's a critical health concern that calls for a more serious conversation. So let's go beyond the jokes and tell the real story about diarrhea in kids. Join us for an eye opening conversation about childhood diarrhea and learn how you can help keep your little ones healthy and happy. Hello, everyone. I'm Dr. Samya Saluja from Tip Media, and today we have with us Dr. Vinit Mehta, who will help all of you parents realize the true costs associated with diarrhea so that your kids can live the healthy lives they deserve. Dr. Vinit Mehta is an expert in pediatrics and neonatology and has more than 10 years of clinical experience. Dr. Vinit is the founder of the eminent Ashray Child Clinic in Surat. Dr. Vinit has a great deal of experience treating kids and has given online consultations to over 5,000 parents. Sir is an expert in safe pediatric vaccination procedures, adolescent medicine, neonatal healthcare, and pediatric nutrition. And he has successfully treated his young patients and also worked with mothers to comprehend the difficulties related to the health of their children. Dr. Vinit, Tip Media welcomes you, sir. Yeah, thank you. Very grateful for Dr. Somya and THIP Healthcare Private Limited calling me for a talk related to diarrhea. Diarrhea is very common in children. Right. Under 5 mortality, most common cause is diarrhea. So second most common is diarrhea. First is pneumonia. So Okay. very important टॉपिक है स्पेशली ये समर्स के टाइम में डायरिया एक मेजर रीजन है ज़्यादा इलनेस के लिए और आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ फॉर चिल्ड्रन बिलो 5. राइट. सो जैसे कि आपने अभी बताया कि डायरिया निमोनिया के बाद एक मेजर कंडीशन है. सो and we know that the number of infant deaths due to diarrhea now has greatly decreased by 50%. And the recurrence of diarrhea, particularly in underweight children, could be harmful. Right, sir? So I am starting off this conversation by asking that what exactly is diarrhea? And what could be its potential causes, particularly in children? So diarrhea is a very difficult definition, like कितना ग्राम किया थ्रू आउट द डे, कितनी बार हुआ, या फिर ईच स्टूल में कितना ग्राम या ml लूज स्टूल है, उसके ऊपर से डेफिनेशन है. और वो अभी ये एज में बहुत डिफिकल्ट है जज करना. नो वन इज गोइंग टू काउंट कि कितना ml हुआ, कितना ग्राम हुआ. So single stool can be a diarrhea. Too many episodes of watery stool can be diarrhea, or blood in stool can also be a diarrhea. तो मोटा मोटा बात करें तो एक्यूट डायरिया है, क्रोनिक डायरिया. एक्यूट डायरिया इज मोर रिलेटेड टू लूज stools for 2 days, for a week, like that. And chronic diarrhea or persistent diarrhea is like a loose stool for more than 2 weeks. Right. बहुत सारे रीजंस हैं, पर 90-95% केसेस एक्यूट डायरिया के ही होते हैं. और उसमें मेनली वाटरी डायरिया है. मेनली वो वायरल की वजह से होता है और फूड इंटेक पे है. और सेकंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है. और थर्ड जो कॉमन है वो ब्लड इन स्टूल यानी डिसेंट्री है, वो भी एक्यूट डायरिया में ही आता है. तो ये सब मेजर कॉजेज है डायरिया के, स्पेशली इन चिल्ड्रन. Right, sir.
सो अब जैसे कि आपने बोला कि अक्यूट डायरिया बच्चों में ज्यादा मिलता है, राइट? या सो उसके बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में आ रहा है कि ये बच्चों में ही ज्यादा क्यों मिलता है इन कंपैरिजन टू एडल्ट्स? और अगर ये बच्चों में ज्यादा मिलता है तो क्या हम डायरिया को एक इन्फेक्शियस कंडीशन की तरह से भी क्लासिफाई कर सकते हैं? तो एडल्ट्स जैसे हमें है वो इम्यूनिटी डेवलप हो गई, हम बहुत सारे इन्फेक्शन से बार बार गुजर चुके हैं, तो जी। उस वजह से हमारी इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी होता है तो हमें 1 या 2 दिन में मेजोरिटी ठीक हो जाता है, और मेजोरिटी फूड रेस्ट लाइक पेट को आराम दे और लिक्विड्स दे तो नेक्स्ट डे का 80% रिकवरी हो ही जाता जी। है। पर चिल्ड्रन में ऐसा नहीं है, उनकी इम्यूनिटी बहुत वीक होती है, और स्पेशली इन द फर्स्ट 5 years। ओके। तो उस टाइम में उनको इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा रहते हम्म। हैं। डायरिया काफ़ी कभार वायरल कॉजेज होते हैं विंटर टाइम्स में। समर टाइम्स में इन्फेक्टिव डायरिया इन द सेंस बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। राइट। तो या मेजॉरिटी डायरिया इन्फेक्टिव ही होते हैं। हाँ, कुछ मेजॉरिटी क्रोनिक डायरिया सेकेंडरी होते हैं, यानी इन्फ्लामेटरी कॉजेज होते हैं जी। सूजन की वजह से। तो वो काउ मिल्क प्रोटीन एलर्जी हो सकता है, या फिर हम्म। अल्सरेटिव कोलाइटिस या क्रोन्स डिसीज जैसे कॉम्प्लिकेटेड इलनेसेस की वजह से होता है। पर यहाँ मेजॉरिटी एक्यूट होते हैं, और वो एक्यूट में मेजॉरिटी इन्फेक्टिव। तो आपने जैसे बताया कि ये इन्फेक्शियस होते हैं, बैक्टीरियल भी हो सकते हैं। तो पेरेंट्स को किस तरह के वार्निंग साइंस का ध्यान रखना चाहिए अपने बच्चों में, या ताकि वो कह सके कि उनको डायरिया है? सो वार्निंग साइंस, एक बार डायरिया हो गए तो डिहाइड्रेशन इज द बिगेस्ट कॉम्प्लिकेशन, की वही वजह से एडमिट होना पड़ता है या फिर बच्चा सीरियस हो जाता है। जी। तो गवर्नमेंट ने सिंपल लैंग्वेज में एक IMNCI गाइडलाइंस बनाए हैं। तो वो जी। इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट नियोनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस जी। नाम बना है। पर यानी दिस इज अ यूनिसेफ गाइडलाइन फॉर स्पेशली मेडिकल ऑफिस जो राइट। पेरिफेरल सेंटर्स में है। और ये अभी इतना सिंपल है कि नॉर्मल काफ़ी पेरेंट्स को समझ में आ ही जाएगा। जैसे उसमें रेड येलो ग्रीन 3 स्टेटस बने हैं। जी। रेड यानी इमीडिएटली हॉस्पिटल को रिफर करना है, येलो जी। में फॉलो अप करना है, जी। ग्रीन मीन दैट कैन बी मैनेज एट होम। ओके। सो उसमें 3 मेजर क्राइटेरिया, एक स्किन पिंच टेस्ट है। जी। वो शायद पेरेंट कर पाए ना कर पाए, पर एक स्किन का एब्डोमेन पे परपेंडिकुलर हम्म। स्किन पिंच लेना है, और वो कितना जल्दी वापस आ जाता है इनके हैविंग डायर। हम्म। तो वो स्किन अगर बहुत वीक हो जाता है तो वो स्किन पिंच की स्किन बहुत टाइम लगती है वापस नॉर्मल पोजीशन पे आने। ठीक दूसरा, है। बच्चा एक्टिविटी, मेन अलर्टनेस है। बच्चा हम्म। अलर्ट है, एक्टिव है, तो कोई हम्म। घबराने की जरूरत नहीं है। पर ढीला है, चिड़चिड़ा है, ठीक है। स्लीपी है, तो भी एक रेड फ्लैग साइन। यूरिन फ्रीक्वेंसी इज अ गुड इंडिकेटर कि ओके। इस यूरिन फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, तो फिर दैट्स अ साइन दैट child is not having enough liquids in the body, ओके। कि यूरिन फ्रीक्वेंसी कम होने लगा है, हम्म। डिहाइड्रेशन के स्टार्टिंग फीचर्स। तो जैसे कि आपने अभी बताया कि स्किन पिंच टेस्ट एंड यूरिन फ्रीक्वेंसी, ये दो मेजर इंडिकेटर्स हैं जिसमें कि पेरेंट्स अपने बच्चों को रेड, आई थिंक ऑरेंज एंड ग्रीन, हेलो। राइट? ये येलो, रेड येलो एंड ग्रीन कैटेगरी में हम उनको रख सकते हैं। सो ग्रीन प्रोबेबली कैन बी हैंडल्ड एट होम, येलो का मतलब है कि दवाई से काम चल जाएगा, एंड रेड प्रोबेबली मींस हॉस्पिटलाइजेशन और सम सीरियस इंडिकेशन। पेरेंट जो है वो बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाते हैं रेड कैटेगरी के या ऑरेंज कैटेगरी के, तो हाउ वुड डॉक्टर्स ट्रीट डायरिया इन सच केसेस? इट डिपेंड्स अपॉन द डिहाइड्रेशन। हम डायरिया
जैसे मैंने फर्स्ट टाइम बताया कि सिंगल एपिसोड कैन बी ए सीवियर डायरिया और मल्टीपल वाटरी स्टूल्स कैन आल्सो बी अ नॉर्मल सिचुएशन आल्सो। सो राइट। हम डिहाइड्रेशन से जज करते हैं, जब बच्चा डिहाइड्रेटेड है तो हम फ्लूइड से ट्रीट करते हैं। तो एक बॉडी वेट के हिसाब से फ्लूइड ट्रीटमेंट होता है, वो मेंटेनेंस बोलते हैं। और एक ठीक है। करेक्टिव फ्लूइड होता है कि जो डिहाइड्रेशन हुआ उस वजह से हमें बोलसिस देने होते हैं कि फ्लूइड का बॉडी रिक्वायरमेंट नॉर्मल हो। ठीक तो है। यानी सीवियर डायरिया हो तो हम पहले करेक्टिव विथ मेंटेनेंस शुरू करते हैं। और ठीक। जैसे जैसे करेक्शन की वजह से हाइड्रेशन बॉडी का ठीक हो जाता है, जैसे कि अ, हम हार्ट रेट से जज कर सकते हैं, अलर्टनेस से जज कर सकते हैं, ब्लड ठीक है। प्रेशर जज कर सकते हैं। तो उस बाद फ्लूइड हम ओरल फ्लूइड्स पे बच्चे को शिफ्ट कर देते हैं। एंड बेस्ट यानी ट्रीटमेंट फॉर डायट ORS, so called oral rehydration solution. ओके। It's powder. We have to dilute it in 1 liter of water, राइट। and you have to give as frequently as possible. ओके। There are other forms of liquid also like lemon water, ठीक है। coconut है, कांजी है। ये सब डायरिया और हाइड्रेशन मेंटेन करने के लिए अच्छा होता है। उसके साथ ओके। जिंक सप्लीमेंट होता है विच इज नेसेसरी एंड शुड बी गिवन फॉर 14 डेज। राइट। ORS होममेड भी हो सकता है। टू टेक 1 glass of water, put one spoon of sugar or राइट। a pinch of salt, and that can be prepared at home and can be offered as frequently as possible. राइट। मोटा मोटा बताए तो 2 साल से कम उम्र के बच्चे को इनकेस ORS या कोई भी लिक्विड देना है तो आफ्टर ईच लूज स्टूल यू शुड गिव हाफ, and for elder child you can give 1 glass or more after each loose stool. राइट। Majority viral diarrheas में antibiotics don't work, so fluid fluid correction ही main है। और it may continue for 3 to 5 days. After third day usually frequency और watery consistency में फर्क पड़ जी। जाता है। इनकेस बैक्टीरियल है तो हमें एंटीबायोटिक देना पड़ता है ठीक और है। 2 या 3 दिन में काफी इम्प्रूव होता है। एंड अब जैसे कि आजकल पेरेंट्स बहुत बिजी रहते हैं, सो या ऐसा हो सकता है that they might miss on these warning signs and probably they might forget to take their child to या the doctor. So what complications can be brought in by this untreated condition? अगर इसको हमने छोड़ दिया तो can मतलब are they potentially lethal or life threatening, ये हो सकती है? तो जैसे बताया कि वो इट्स अ सेकंड मोस्ट कॉमन फॉर अंडर 5 मोर्टालिटी। Yes, sir. मोर्टालिटी मीन्स डेथ ऑफ चाइल्ड, एंड UNICEF also agrees that it is the second most. Now there is a vaccine also, but still it's still too common. So Right. if neglected and brought in the last stages, then Mm-hmm. obviously dehydration is the main thing, and it causes second is electrolyte imbalance. तो Okay. डिहाइड्रेशन की वजह से फिर ब्लड प्रेशर बहुत डाउन हो जाए तो फिर वीनस एक्सेस नहीं मिलता है ठीक और है। बच्चा टोटली शॉक में होता है। Mm-hmm. और इनकेस वॉमिटिंग साथ में है तो वो बहुत ही ओवर कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है क्योंकि वी कैन नॉट गिव ओरली ऑल्सो, Right, sir. that doesn't remain in the body, and then water doesn't remain in the body, and then it becomes very difficult to treat. And Mm-hmm. second, electrolyte balance. So there are शरीर में क्षार होते हैं, सोडियम है, पोटेशियम है, तो वो Okay. भी बाइकार्बोनेट है, तो वो एक नॉर्मल लेवल्स मेंटेन रहने चाहिए। और Mm-hmm. इफ डायरिया फ्रीक्वेंसी इज टू मच एंड वाटर लॉस हैज बीन टू मच फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक तो है। फिर तो सोडियम बहुत हाई हो जाता है, पोटेशियम फॉल डाउन हो जाता है, बाइकार्बोनेट इज ऑल्सो ऑन द लोएस्ट लेवल, एंड इफ बाइकार्बोनेट इज लो देन एसिड्स इन द बॉडी इंक्रीज, then it becomes very difficult to treat. लॉन्ग स्टे तो है ही, पर सर्वाइवल में भी इश्यूज रहते हैं। Okay. Right. So there can be chances जहाँ पे if it's missed, it can be.
लाइफ थ्रेटनिंग, राइट सर। ओके। एंड अभी जैसे आपने बताया कि वैक्सीन है और हम ओआरएस भी घर पे बना सकते हैं, तो उसके अलावा व्हाट शुड पेरेंट्स नो अबाउट प्रिवेंटिंग दिस चाइल्डहुड डायरिया? So yesterday also there was a LinkedIn post कि मैकडी की फ्रेंच फ्राइज कैसे बनती है, तो they require particular type of potato, and that can be, it's a genetically engineered potato and GMO potatoes, and they require special pesticides to be that long of potato, and then when they do that pesticide spray, they keep it for at that time the farmer doesn't enter his farm even for 5 days. When they are stored, they have to be stored for 6 weeks in a go down, and at that time also no one can enter because it releases toxic fumes. So our choices of food is very important. That's one very easily preventable cause of diarrhea. Uh, Outside food, street food, that can be a common cause of bacterial infective diarrhea. Okay. Yeah, viral infective diarrhea vaccine is a good option. Yeah, vaccine is 60-70% efficacious, but very helpful for children below 2 years. Right. If they are vaccinated, they can be managed at home, and they don't Right. be that too serious that we need to admit them. So yeah, government has included in the routine immunization program, Right. and yeah, majority are getting vaccinated for rotaviral type of viral diarrhea. Okay, sir. So yeah, so food and hygiene is the main thing. Third, which is more common, which we are seeing right now, is bottle feeding. Sometimes bottle feeding can be unhygienic practices, can make feeding is the main source for the child. And if the bottles are not that clean, especially for the uh, we say a lower socioeconomic class, for them it's not the right choice to feed the child. Right. फिर उससे ही इन्फेक्शन हो जाता है, नॉट ओनली डायरिया बट थ्रोट इन्फेक्शन है, निमोनिया, गैस प्रॉब्लम, Okay. ईयर इन्फेक्शन. Okay. Preferably bottle feeding shouldn't be done Right. for infants Okay. 2 years. Right. So thank you so much, Dr. Vinit. We really appreciate you being with us today. I Sure. am hopeful our discussion can aid in the fight against this threat, which continues to devastate poor regions, and be helpful in reducing recurrent exposure to stomach ailments that could harm growing children, especially Yeah. their health. Yeah. Thank you so much, sir. And for more such Sure. informative Thank you videos, for thank you, sir. And for more such informative videos, please subscribe to our channel and press the bell icon for regular updates. Thank you once again, sir. thank you.